अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने सुनने वाले देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। बेटा आज का लेक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होने वाला है, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई माई सेल्फ बेस्ट टू कीप माई सेल्फ विद इन लिमिट्स। लेट्स स्टार्ट today's lecture. We call it magic method. What are magic methods? Those are also called as special method or Dunder method. Concept is single concept having different names. We call them with different names. We can call them either magic or special or Dunder. Why there are different names? What is the purpose behind the naming convention? And what is the proper definition of these magic words? What is the proper implementation? Okay, everything gets we'll discuss in this very lecture. So let's start. Okay, I will start by the definition. And after that I will discuss each and every part of the definition. What we can say, a magic method or a Dunder method or a special method is a method. What kind of method? Whose name starts and ends with double underscore and are called implicitly implicitly by Python to execute certain task, certain operation. Okay, this is the definition. What is definition? A magic method is a method whose name starts and ends with a double underscore and are called implicitly by the Python to execute certain operations. Okay, now let us elaborate this definition. Okay, what is the proper meaning of this definition? Okay, so many things are hidden in this definition. Suppose I may write A is equal to 12, B is equal to 13, and C is equal to A plus B. Okay, and after that I will print this C, print C. Okay, now what will happen? If this small kind of the program, by the small kind of the program, it will add the two numbers A and B, that is the output will be 25. Is it so? Yeah, it's clear. No need to execute this program. You are quite familiar with these things. Now I can also write one more thing here. Let's try to execute it, and after that I will execute this very program, run this program in another way. Okay, here it is. What is the output? Output is 23 because it is 10, it's 13, and output is 23. Okay, now I have make use of here. I have make use of plus operator here. Okay, I can also make use of C is equal to, or we can say print, simply print what to print. First thing is what is the data type of this variable A? It belongs to an class integer, isn't so? This variable B also belongs to class integer because as per its value as you have already seen and you know that
Python is a dynamic typing language. Its type gets associated with a variable at the runtime. Okay, now its variable is b and its value is 13. It means that its type is, it belongs to class. What kind of class it belongs? It belongs to class integer. Now let's first try to print the class. Print, what to print? Type of a, type of a. Okay, and after that I will make use of these two things. Print type a. What is it? It belongs to class integer. Okay. Similarly, b also belongs to class integer. Okay. Now let's move forward. Don't worry. One way of adding the two variables a and b is just making use of the plus operator. Now I will take you the actual thing what happens when you are making use of this plus. Actually what happens, I will say the real thing which internally gets called when you are making use of the plus operator. That is, you are calling the int class. You are calling the int class. You are calling the function of int class. Add a function of int class. Okay, and then you pass the values a and b. A and b. Okay, here as I have written here. What is the meaning of this statement? I have invoked the add function, add method of what class? Int class, to which they belong. Okay. And after that, I passed the two arguments. You will see the same result as here. It will also give 23. Output will be 23. Here output will be 23. 23 will become 2 times. Okay. Isn't so? Now what is the meaning? Why I am making use of this thing instead of plus? Every time when you are making use of any kind of the operator in your program, whether it is multiplication, whether it is subtraction, whether it is division, every time when you are making use of any kind of the operator in your program, it is corresponding method gets internally invoked. It is corresponding method gets automatically called and the function gets done, operation gets done. Okay, so instead of writing such a thing of code, instead of writing this whole thing, I have been asked to write, just write what to write? Write plus. Okay, instead of these things, instead of this long code, I have been asked to write a small operator symbol, that's plus. But internally what happens? Internally happens that when I am making use of plus operator here as here, internally this very method of which belongs to class integer gets invoked, gets called, and your addition is done. Clear? Such a method, okay, this is the method now. Such a method which have two double underscores before and after the name, and after the name, and it gets implicitly called without writing the actual name. It gets implicitly called. This kind of the method is called as the dunder method, magic method. So I can write the same thing here. Now I will compare this with my definition that I have written this very portion. Okay. Okay. Now compare this. A magic method is a method whose name starts and ends with a double underscore. Name starts and ends. Starts with double underscore, ends with double underscore, okay, and are called implicitly. How they are called? We are calling it by making use of just plus. Okay, just making use of the plus implicitly. I am not writing the actual code. I am calling it implicitly. Python calls it implicitly. Such methods are called as
magic methods. They are called special methods. Now, so many things are there. Why they are called as magic? What kind of magic is there? Why they are called as the magic methods? What kind of magic is behind these methods? Okay, the only magic is there. Only one magic is there. What is that? They the magic which is there is that they they get invoked, they get called automatically. Python automatically call magic methods in the response of certain operation. Okay, so we can say this is the only magic. The only magic is, what is the only magic? Only magic is they get automatically invoked. Only magic is they get automatically or implicitly invoked or called. They get automatically called. This is the only magic behind these methods. Okay, this very portion becomes clear. Why they are magic? What kind of magic is there? They get automatically invoked without explicitly writing them. Okay, they get implicitly invoked. This is the first thing. And after, one more thing is there. Why they are called as the dunder? Dunder is nothing but it is a naming convention. Dunder is naming convention. Naming convention. Okay, this is nothing but it is a naming convention. It is a naming convention that Python uses name magic method. The convention is to use double leading and trailing underscores. Okay, double, what double? Double leading as well as trailing underscore. So in general, we may say it is these are the leading underscores, and after that you have to write the name of the method, and after that you have to write the trailing these underscores. This is the naming convention. That's why it is called a dunder. You may have also heard the name dunder multiplication, dunder addition. Okay, so these are the two things which make clear that why they are, what kind of magic is there, and why they are called as the dunder method. But so far as Python's documentation is concerned, these methods are called as, officially they are called as special methods. Specialty in what? They get implicitly called. This is the specialty. And one more specialty is there. They have they are special in they have special names because they get start with underscore, double underscore, and they get, and their names have underscore at the end also. This is the specialty. But take the case that if you want to have the official name, so far as the Python's documentation is concerned, the official name of these methods are called as the special method. So we can write that the method that is called implicitly by the Python to execute certain operation on the data, such as addition, such method name starts and ends with a double underscore, or called as the magic method. Clear? It becomes now clear. No, there is nothing to discuss about those magic functions. Now let's implement. How to implement these magic methods? Why we are making use of these magic methods? Okay. For example, I have a list. A is equal to, or simply say is equal to a string, ASHRAF, Ashraf. Okay. Okay. And after that, I want to get the length of this string. I will write print len of a. Isn't it so? Print len of a. This is the, what you will get output. You will get the number of characters which are present in this string. It is 3 and 3 6. Let's execute this code here. Okay, let's execute this code. Before executing the code, I will comment out this very thing. Okay, you will get 6. Here it is 6. Now I am making use of the len method to
to count the number of characters which are present in this string. Similarly, I can make use of the dunder method. How? Okay, I'm here, print. As you know, it is a string, so I will write str string. Str. Okay, string dot underscore underscore, and then len underscore underscore, and after that I will mention the object who's a. Okay, now take. This is the actual method which gets invoked when you are writing here len, this keyword. Okay, you will see. Try to run 6 6, यहां से भी 6 आ जाएगा और इस वाले स्टेटमेंट से भी 6 आ जाएगा. This is the fun of these dunder methods. When you write len, length, actually what gets invoked? Str. That is the data type of this very variable. Okay, and after that the actual method gets invoked, that is len. So we can say this is the dunder method or the magic method. So simply here what I'm trying to say is that when you write name is equal to Ashraf, okay, when you write name is equal to Ashraf, okay, Python automatically assigns it corresponding class. Okay, one thing becomes clear, class gets assigned to this variable. Okay, and after that the all those functions which are applicable on this class, gets invoked automatically on this very variable. Okay, for example, I may write here, I will check a dot. These are the methods which get automatically applicable on this a when we have assigned it an integer value to it. These are the things that gets or methods that get assigned with these. Okay, these are the methods. Okay, is it clear? Everything is clear now. Now let's move forward. Let's make use of these len method. Let's make use dunder method in case of multiplication. If I write a is equal to 12, b is equal to 13, okay, and c is equal to a into b, and after that I will print this, print c. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया c को. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा. ये वाला पोर्शन मैं इसको बंद कर दूंगा, तो आपके पास यहाँ से काम हम चला देंगे. You will get the multiplication 156. Okay, now the same I will do the same function. यहाँ से भी काम हो जाएगा, मैं इसको हटा दूंगा. मैं लिखूंगा भाई साहब प्रिंट कर दो. व्हाट टू प्रिंट कर दो आप किस क्लास के ताल्लुक रखते हैं? स्ट्रिंग से, सॉरी इंटीजर से. इंट में से किस फंक्शन को आपको इन्वोक करना है? एड मल्टीपल फंक्शन से, दैट इज mul. ओके, मल्टीपल फंक्शन, and after you have to pass the sorry, here I have to write the dot, int dot, and I have to pass a and b. Okay, is it clear? Now let's see 156 here also. It means that when you are making use of multiplication, you are internally invoking this kind of the method. Such methods are called as the dunder methods. Clear हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. Now let's take an example of the class. अब एक यूजर डिफाइंड क्लास को हम ले लेंगे. एक बात यहाँ पर क्लियर है कि जो ही आपने एज इक्वल टू अशरफ लिखा, दो चीजें होती है. एक, पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन करता है क्लास आपके वेरिएबल को, ठीक है, एज पर द डेटा टाइप. और पाइथन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स एप्लीकेबल होती हैं उस पर ऑटोमेटिकली वो उस पर आ जाती हैं. ठीक है, तो अब मैं एक क्लास को डिफाइन करूंगा. क्लास पर्सन सपोज. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से किसका इस्तेमाल करेंगे? अब इन डंडर मेथड. इसका बड़ा अहम है, बहुत ही अहम है. क्लास लिखूंगा एक
क्लास का नाम मैंने लिखा है पर्सन, फिर डेफ, हालांकि ये भी दूसरा है, INIT, ये भी वही मेथड है, स्पेशल मेथड। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे सेल्फ और सेल्फ के साथ हम लिखेंगे नेम। ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। क्लियर? ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट person1, p1 इज इक्वल टू पर्सन, सॉरी पर्सन। ठीक, एक क्रिएट किया मैंने, एक यहां पर पर्सन, choose some little, what is the problem here? Okay, I have to pass the argument here. Ashraf, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला किस्सा क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। चलो, मैं एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक मेथड में एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। प्रिंट कर दो, व्हाट टू प्रिंट, मैं लेंथ देखना चाहता हूँ इस अशरफ की। प्रिंट LEN, लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट? P1 की। P1 ऑब्जेक्ट जो मेरा है, मैं उसकी लेंथ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। इज इट वर्केबल और नॉट? मैंने क्या किया, एक क्लास मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, उस क्लास के अंदर मैंने एक नाम डिफाइन किया है। ठीक है, एक एट्रीब्यूट है नेम, और नेम का वैल्यू यहाँ से आ गया। एक यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम मैंने P1 रखा। वो किसका ऑब्जेक्ट है? इस क्लास का। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी मेथड्स इस क्लास के अंदर, वो सारी की सारी इसमें चली जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक मेथड है जो इनबिल्ट मेथड है मेरा, लेन मेथड है, उसको मैंने एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो ये दिखा रहा है टाइप एरर। क्यों दिखा रहा है टाइप एरर? किसका? ऑब्जेक्ट। देखिए मैसेज क्या आ रही है, मैसेज क्या आ रही है, मैं मैसेज को यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। मैसेज आ रही है टाइप एरर, ऑब्जेक्ट टाइप पर्सन हैज नो लेन। ये जो ऑब्जेक्ट टाइप मेरा पर्सन है, इसमें कोई लेन तो है ही नहीं जिसको मैं यहां से एक्सेस कर पाऊं। ये इनबिल्ट है मेरा, मैं इनबिल्ट फंक्शन को यहां से डायरेक्टली इस फंक्शन में नहीं ला सकता। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहने जा रहा हूं? शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कहता हूं कि ये टाइप एरर दिखा रहा है। किस किस्म का टाइप एरर दिखा रही है? कहता है कि ऑब्जेक्ट पर्सन जो आपका है, ये क्लास पर्सन जो आपका है, इसमें कोई फंक्शन है ही नहीं, कोई मेथड है ही नहीं, हैज नो लेन, इसमें लेन है ही नहीं। तो आप यहां पर एक्सेस कर रहे हो दिस। तो यहां पर इफ वी वांट टू यूज दिस बिल्ट इन, ये हालांकि बिल्ट इन मेरा मेथड है, इफ यू वांट टू बिल्ड यूज दिस बिल्ट इन ऑपरेशन in user defined classes, then we have to make use of the magic method. The magic method comes into a picture here. Okay, now I will write here. Okay, I will discuss. I will say def, okay, underscore len, एक फंक्शन, एक मेथड में डिफाइन करने जा रहा हूं जो नेचुरल, जो इनबिल्ट है, और इसके साथ मैंने रखा है सेल्फ, और आउटपुट देना चाहता है ये वाला, रिटर्न करेगा, करना चाहिए लेंथ, LEN, लेंथ। किसकी लेंथ? किसकी लेंथ रिटर्न करेगा? सेल्फ डॉट नेम की। क्लियर? ठीक है, अब मैंने यहां पर एक फंक्शन डिफाइन किया है, डंडर फंक्शन, जिसको हम मैजिक फंक्शन कहते हैं, और उसका रिटर्न क्या है? लेंथ दे देगा। अब देखना, इसकी जो लेंथ होगी वो आपको आ जाएगी आपके सामने। ओके, क्लियर? इट्स नाउ वर्केबल, बिल्कुल आसान। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने क्लासेस में बिल्ट इन जो भी मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डिफाइन दोज मेथड्स by making use of their magic method, not actual method. You have to make use of the Dender method here. You have to make use of
the methods those are called as special methods here, and after that you will उसके बाद ही आप उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसको अपने हिसाब से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी उसको काम करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूंगा कि जो लेंथ है उसको ऐड कर दो 2। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूंगा लेंथ के साथ 3 ऐड कर दो। इसकी लेंथ क्या है 6 और 3 ऐड करेगा 9 आ जाएगा। देखिए 9 आ गया आपके सामने। हालांकि लेन का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि लेन से क्या होता है, लेन से जो टोटल कैरेक्टर्स इन एनी काइंड ऑफ द स्ट्रिंग है वो आपके सामने आ जाते हैं, लेकिन मैंने यहां पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस लाइन को डिफाइन किया है। अगर ये प्रेजेंट होगा आपकी क्लास में तब कहीं जाकर आप इसको एसेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। चलो और एक चीज मैं यहां पे करने जा रहा हूं। मैं इसे कहूंगा प्रिंट कर दो भाई साहब। प्रिंट व्हाट टू प्रिंट, यू हैव टू प्रिंट प्रिंट कर दो P1 में से जो 5 इंडेक्स पे है लेटर उसको प्रिंट कर दो। जो 5 इंडेक्स पे मेथड है, 5 इंडेक्स पे 0 1 2 0 1 2 3 4 5, ठीक है 5 यानी F होना चाहिए। आप देखते क्या ये रन होता है कि नहीं होता। आ गया यहाँ पर पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नॉट सबस्क्रिप्ट एवर, क्यों नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर इस फंक्शन को मैंने पहले दिखाना है, जिससे हम किसी इंडेक्स के जरिए किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को ले आते हैं। तो हम कहते हैं उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन है, उसको हम कहते हैं गेट आइटम। और उसके बाद हम लगा देंगे सेल्फ, और सेल्फ के बाद लगा देंगे आई, जिसको हमने निकालना होगा। और इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि आप भाई साहब रिटर्न कर दो। व्हाट टू रिटर्न, यू हैव टू रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट नेम। और सेल्फ डॉट नेम में कौन सा किस्सा आपको रिटर्न करना है, जो आई में होगा। आई आपके आई यहां से आ जाएगा। क्लियर? आप देखो अब शायद अब क्लियर होगा, अब ये रन होगा। हाँ जी आ गया 5th पोजीशन। ठीक है 0 से स्टार्ट होगा 6 होगा, तो 5th पोजीशन पे आप 5th पोजीशन पे है। क्लियर हो रहा है? तो उसका मतलब है अगर आप अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपने क्लासेस में रेंडर मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहते हो, देन you have to first define those classes in your those methods in your class, and after that we will access them. Hope that you may have heard, you may get something out of this lecture. आने वाले लेक्चर में हम ऑपरेशन ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, धन्यवाद।